Hello and welcome back again to Humanities Adda. This will be second part of Bernier. We have already discussed certain things of Bernier, like the questions, introduction, then Bernier and the degenerate East. What kind of opinion did he have about the East and किस तरीके से उसने East को represent किया specifically. अब land ownership जो है इसकी हम बात करते हैं. It is very important. तो अकॉर्डिंग टू बर्नियर अगर हम देखें कि एक जो फंडामेंटल डिफरेंस था बिटवीन मुगल इंडिया एंड यूरोप वाज द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड इन द फॉर्मर. मुगल इंडिया में ही सेड कि देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऑल द लैंड वाज ओन्ड बाय द किंग. And he, if we see Bernier, तो वो एक firm believer था in the virtues of private property and saw crown ownership of land as being harmful for both the state and its people. And he will be explaining why this crown ownership of land is bad and how it has affected Indian subcontinent. But again, we have to look at the counter arguments also, जो इसके in statements के against we can write so that you can make your answer more inclusive, जो कि हमें एनसीईआरटी में ही मिल जाएंगे. सो अब हम देखते हैं कि बर्नियर ने के ओपिनियन में क्या था. ये he thought that in the Mughal Empire, the emperor owned all the land and distributed it among his nobles, and that this had disastrous consequence for the economy and the society. तो मुगल एम्पायर एक तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है, we can just wait. In the questions section, if we go back, there was a question like, okay, examine why Bernier was against the idea of crown ownership of land in Mughal India. So in this, you can specifically write this line. This will describe it in a better manner. That he thought कि मुगल इंडिया में जो कि एम्पायर में एम्परर सारे लैंड को ओन करता था and he distributed it amongst his nobles, and that this had disastrous consequence for the economy and society. You can just write, put a how over here. Like we can just say ki he's saying this statement, but how? You can just put a question mark and you can ask how you can, say that this private ownership of land, the absence of private ownership of land in Mughal Empire, had disastrous consequence for the economy and society. So you have to explain this because this is merely a statement. अब statement को थोड़ा बहुत elaborate करना पड़ेगा. So you have to know. So this perception was not unique to Bernier, but is found in most travelers. अकाउंट ऑफ द 16th एंड 17th सेंचुरी. तो ये जो एब्सेंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप वाला जो लैंड में ये जो एक ओपिनियन है, परसेप्शन है, वो सिर्फ बर्नियर में ही यूनिक नहीं था. और भी जो ट्रैवलर्स थे दे आल्सो सेड द सेम थिंग व्हेन इट यू टॉक अबाउट द लैंड ओनरशिप. नाउ ही गिव्स certain reasons why this is bad, why the crown ownership of the land is bad. एंड क्राउन ओनरशिप ऑफ द लैंड वी कैन से कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी, उनका लैंड नहीं है सारा लैंड. सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि सारा लैंड जो है इट बिलोंग्स टू द किंग. एंड अब हम देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, हाउ इट इज बैड. सो क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, argued Bernier that landholders could not pass on their land to their children. तो एक तो रीजन ये है कि जो लैंड होल्डर्स हैं वो अपने लैंड को अपने चिल्ड्रन को नहीं पास ऑन कर सकते. So they were averse to any long-term investment in the sustenance and expansion of production, because when you have this psychology that this is not something which is mine, so why should I take care of this thing ultimately, because it will be taken away from me. So here Banya says this thing that this may be the consequences कि इस तरीके से जो क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड है वो इस तरीके से हैम्पर करता है. Then he says that absence of private property in land had therefore prevented the emergence of class of improving landlords. ये एक क्लास ऑफ इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स जो होते, अगर क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड नहीं होता वो यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, वो प्रिवेंट हो रहा है. एंड ये इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स अगर हम देखते हैं वेस्टर्न यूरोप में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, with a concern to maintain or improve the land. So no one over here was interested in maintaining or improving the land
सिंस द लैंड बिलोंग टू द क्राउन। ये बर्नियर का एक अजम्पशन है। Now, it had led to the uniform ruination of agriculture, excessive oppression of the peasantry, and a continuous decline in the living standards of all sections of society, except the ruling aristocracy. Why? Because ruling aristocracy जो है, जो nobles हैं, जो officials हैं, king ultimately उनको ही land देता था. So he used to, जब हम मुगल इंडिया पढ़ेंगे तो we will understand about this in more depth. But यहाँ पे सारे लोग पुअर हैं एक्सेप्ट द रूलिंग एरिस्टोक्रेसी. सो अगेन यू विल सी द बाइनरी वाली जो चीजें हैं, एक वो हम देख सकते हैं कि एक तरफ यू हैव द पुअर पीपल एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव rich people, and in between you will find no one. So the middle class is also absent in this, the in this period. तो यहाँ एक साइड पे हमें पुअर देखने के लिए मिल रहा है, दिस इज द बाइनरी अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग. मतलब बर्नियर ने जो अप्रोच एक तरीके से यूज किया है. Then Bernier described Indian society as consisting of undifferentiated masses of impoverished people subjugated by a small minority of very rich and powerful ruling class. तो अगर हम अब इनकी पॉपुलेशन को देख लें तो ये जो पुअर है दे आर इन वेरी लार्ज क्वांटिटी एंड दे आर अनडिफरेंशिएटेड, सारे के सारे पुअर हैं. रिच ऑन द अदर हैंड दे आर वेरी स्मॉल, एक स्मॉलर ग्रुप है. एंड पुअर को ये एक तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं, सब्जुगेट कर रहे हैं. Now, between the poorest of the poor and the richest of the rich, तो हम दो एंड पे अगर हम जाएं तो एक एंड पे हमें मिलेगा सबसे पुअर, एक एंड पे हमें मिलेगा सबसे रिच इंसान. देयर वाज नो सोशल ग्रुप और क्लास वर्थ द नेम. Bernier confidently asserted there is no middle state in India. That means यहाँ पे middle class की बात हो रही है, which is very important for any society to develop and to move towards kind of urbanization and all that. यहाँ पे बर्नियर ने एक absence of private property कह दिया, and because of the absence of private property he goes on to say that there is no middle state or middle class in India. एंड किस तरीके से सिर्फ पुअर और रिच, एक दो बाइनरी जो ऑपोजिशन है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. नाउ ओके, सो वी हैव डन दिस मच. नेक्स्ट इफ वी सी, so we have some counter argument. This is not given as specifically in your book, like इसको पॉइंट आउट करके नहीं दिया गया, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो बर्नियर ने कहा उसके जो अंडरस्टैंडिंग है लैंड ओनरशिप की, उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में हम क्या कह सकते हैं. वॉज इट एग्जैक्टली द ट्रू थिंग कि जो बर्नियर कह रहा था वो बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया था उसने, और जो भी उसने कहा वो सही था. सो वी विल सी इन दिस पोर्शन. So this then is how Bernier saw the Mughal Empire. Overall अगर हम देखें बर्नियर ने मुगल एम्पायर को किस तरीके से जो ओपिनियन है उसका ओवरऑल क्या है. इट्स किंग वाज द किंग ऑफ बेगर्स एंड बार्बेरियंस, बिकॉज किंग इज द रिचेस्ट एंड देन यू हैव द पुअर्स ऑन द अदर साइड, द बाइनरी एक तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं. और एक you see just two opposite things, the poor and the rich. Its cities and towns were ruined and contaminated with ill air. Cities and towns को कह रहे हैं कि contaminated है air, ill air से, and its field overspread with bushes and full of pestilential marshes. So you have the fields, अगर हम देखें तो bushes है, pest है, marsh, इस तरीके से situation है. And all this was because of one reason. तो ये सारे जो एक प्रॉब्लम्स है, 5 problems and 1 solution वाला जो यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, it goes to crown ownership of land. The solution इसका क्या होगा कि we should go for, the Mughal India should have gone for the private ownership and all these issues will solve. But actually may do we know, actually may, is it true that there was crown ownership of land? First we have to question this, because because someone is saying, and that too from another part of the world, he's coming and he's just observing things, do we have to agree to this if there was crown ownership of land and there was no private property? No, we do not need to agree to this. Hence we have the counter arguments. So if you see curiously, none of the Mughal official documents, जो हमारे पास official documents हैं, suggest करते हैं कि that the state was the sole owner of land. तो ऐसा कोई suggestion हमें किसी document में नहीं मिल रहा है, assumption नहीं मिल रहा है. For instance, अबुल फजल की जो ऐन अकबरी है,
16th century official chronicle और अकबर reign का इसके बारे में you must be knowing. So he described land revenue. उसने land revenue को किस तरीके से describe किया है? As remunerations of sovereignty. तो ये एक key point है. You can include it, when you are counter arguing the assumptions made by Bernier. तो अगर 8 marks वाले में आ रहा है तो you have to include this portion also. You cannot just write about what Bernier thought and what Bernier said, because that is not completely true. You have to look other way also. तो ये remunerations of sovereignty होता क्या है? ये होता है claim made by the ruler on his subjects for protection he provided rather than as rent on the land that he owned. Land revenues by the king, they used to take land revenue. This is very basic because king was somehow protecting the, we can say, the subjects. He was providing services to them, and for this is kind of we can say contract जिसको बोलते हैं, वो एग्जिस्ट कर रहा था. एंड किंगशिप का जो एक तरीके से फाउंडेशन है, इफ यू हैव गॉन थ्रू थीम 4, उसमें भी थोड़ा बहुत हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो किंगशिप के फॉर्मेशन के बारे में पता है कि हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, हो तो वहां से हमें थोड़ा बहुत पता चलता है कि ये एक somehow we'll see कि the theory of kingship है, it is very much based on a kind of contract that I am providing you support, you give me something instead. So it is not, land revenue is not like कि rent, मैं land own कर रही हूँ इसलिए तुम मुझे rent दो. It is possible that European travelers regarded such claims as rent because land revenue demands were often very high. तो पॉसिबिलिटी है कि यूरोपियन ट्रैवलर्स को ये लगता होगा कि ये जो लैंड रेवेन्यू है ये रेंट है, बिकॉज द रेवेन्यू डिमांड्स दे वर very high in those times. However, this was not actually a rent or even a land tax. लैंड टैक्स नहीं था, ये रेंट भी नहीं था, ये था टैक्स ऑन द क्रॉप. तो ये जो भी टैक्स लगता था, इट वाज बेसिकली इसको क्रॉप पे लगाया जाता था. तो आई सपोज, आई होप दिस मच इज यू नो clear to everyone. Then we have the another important portion, that is influence on western theorist. अब western theorist को किस तरीके से बर्नियर जो है वो influence करता है, that we will see. And just a second, where were we? Yes. So influence on the western theorist अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन influenced Western theorists from the 18th century onwards. He is writing in 17th century. What 18th centuries क्या हो जाता है? 1700 onwards का time period. तो we as you must have read in the slide कि किस तरीके से बर्नियर का अकाउंट काफी फेमस हो गया था. तो इसके कारण his writing will be influencing other writers as well. अब फ्रेंच फिलोसोफर की अगर हम बात करें, मॉन्टेस्क्यू की अगर हम बात करें, he used this account to develop the idea of ओरिएंटल डिस्पोटिज्म. एक आइडिया है जो एक तरीके से डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड ओनरशिप. वो होता है ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का. व्हाट इज ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, इसको हम समझेंगे. इसके अकॉर्डिंग रूलर्स जो थे एशिया में, द ओरिएंट और द ईस्ट, enjoyed absolute authority over their subjects who were kept in conditions of subjugation and poverty, arguing that the land that all land belonged to the king and the private property was non-existent. So it, you can say कि oriental despotism is all about a kind of stagnant society, a society in which the people, they are subjugated, there is poverty, and all the lands, all the resources belong to the king. So इस तरीके की एक आइडियोलॉजी है वो हमें देखने के लिए मिलती है from one ideology that we have coming from Bernier's account. और जो फ्रेंच हम देखते हैं कि फिलोसफर ने दी, दैट इज ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म. सो यू हैव टू राइट अबाउट दिस. ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिया है. सॉरी, आई डू नॉट हैव दिस लाइक, वेट, ओके, सो वी आर लाइक, आई हैव right orient written over here oriental. Now according to this view, everyone except the emperor and his nobles barely managed to survive. तो ये ग्रेव सिचुएशन है यहाँ. दिस आइडिया अगर हम देखें कि फर्दर डेवलप किया जाता है, इसी आइडिया को फर्दर डेवलप करेंगे. कौन डेवलप करता है? तो वो है कार्ल मार्क्स ने इसको डेवलप किया था एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन.
तो सेकंड जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, सेकंड आइडियोलॉजी जो है, coming from his, is Asiatic AM mode of production. So we can write it AMP. ये दो चीजें देखेंगे, ये 19th सेंचुरी में ये कार्ल मार्क्स ने इससे ही एकदम somehow being influenced by Bernier and all that. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बर्नियर ने ही इन्फ्लुएंस किया था, वी हैव सीन दैट देयर वर अदर travelers also who had same kind of opinion, European travelers who had same kind of opinion अबाउट द इंडियन सोसाइटी, जिनके ओपिनियंस ऑलमोस्ट सेम थे बर्नियर के ही जैसे थे अबाउट द इंडियन सोसाइटी एंड अबाउट लैंड ओनरशिप एक्सेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ही आर्ग्यू, तो कार्ल मार्क्स ने आर्ग्यू किया कि इंडिया और जो बाकी एशियन कंट्रीज हैं वहां पे सरप्लस जो है वो सपोर्ट स्टेट से ले लिया जाता था, मतलब सॉरी वाज अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। तो जितना भी सरप्लस प्रोड्यूस होता था वो स्टेट ले लेता। दैट मीन्स इन द विलेजेस एंड ऑल में जो भी प्रोडक्शन surplus है in the form of land revenue are taking away the surplus, the extra money which people have. This led to the emergence of society that was composed of a large number of autonomous and egalitarian village communities. So ये कार्ल मार्क्स ने कहा है कि autonomous, large number of autonomous and egalitarian में हम यहाँ पे देखने की क्लास डिफरेंसेस हमें ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ये प्रोसेस जो है वो हुआ बिकॉज ऑफ दिस थिंग, द यू कैन से द क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड। द imperial court presided over these village communities, respecting their autonomy as long as the flow of surplus was unimpeded. तो ये जो imperial कोर्ट है वो एक तरीके से हम देखेंगे कि ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करेंगे जब तक सरप्लस उनको मिलता रहेगा। ये इसको कहा जाता है कि एक बहुत ही स्टैग्नेंट सिस्टम है जहाँ पे एगैलिटेरियन विलेज है, कम्युनिटीज हैं, ऑटोनॉमस हैं, यू आर काइंड ऑफ फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, उससे तुम बाहर नहीं आ पा रहे हो, देयर आर नो चेंजेस। दिस वाज अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ये है। However, as we will see, this picture of rural society was far from true. ये हमें काउंटर आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इन फैक्ट ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी, यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसा यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने लिखा है, दैट वाज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। how it was not exactly true and how we can counter it. So in fact, during the 16th and 17th centuries, rural society was characterized by considerable social and economic differentiation. So he's talking about egalitarian village communities, but what we see instead is, you know, society divided by the, social and economic differentiation हमें देखने के लिए मिल रहा है। So at one end, end of the spectrum were the big zamindars who enjoyed superior right in land, and other end पे हमें फिर यहाँ पे landless laborers देखने के लिए मिल जाते हैं। But what is important here to notice कि in between was the big peasant. Big peasant यहाँ पे बीच में है। अगर यहाँ पे हमें एक साइड पे पुअर लोग दिख रहे हैं, अगर हमें गरीब देखने के लिए मिल रहे हैं, लैंड लेस लेबरर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, सो ऑन द अदर हैंड व्हाट वी हैव, यहाँ पे हमने देखा कि बड़े बड़े जमींदार हैं, ठीक है, ये जमींदार हो गए, और बीच में बट वी हैव सम पीपल हु आर लाइक these people, big peasants who used hired labor and engaged in commodity production, and the smaller peasants who could barely produce for his subsistence. तो यहाँ पे बिग पीजेंट्स भी है और यहाँ पे हमें स्मॉलर पीजेंट्स भी देखेंगे, यहाँ पे एसपी लिख देते हैं। सो यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें देखने के लिए मिला, तो यू सी दिस मच कैटेगराइजेशन इज अवेलेबल, इट इज नॉट दैट कि सारे यहाँ पे egalitarian village community है। You have the poorest of the poor, then you have the small peasants, then you have the big peasants, then you have the zamindars, big landlords. So I hope this much you have understood. कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी की अगर हम बात करें, अब इसमें हम देखते हैं कि जो भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी, बनियर ने जो भी मेंशन किया, वाज इट ट्रू, एग्जैक्टली ट्रू, या फिर जो सोशल रियलिटी है, it is very complex, it was very complex to interpret, and Bernier failed to do so somehow, we can say that. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से बर्नियर के अकाउंट से जो एक्चुअली में सोशल रियलिटी है वो डिफरेंट है। So a more complex social reality, while Bernier preoccupation with projecting the Mughal state as
tyrannical is obvious. His descriptions occasionally hint at a more complex social reality. So उसी के राइटिंग में से हम कह रहे हैं कि जो वो बर्नियर है वो हिंट कर रहा है कुछ डिफरेंट, occasionally hint kar raha hai at a more complex social reality. So it is not just black and white, but it is gray. So for instance, he felt that artisans had no incentive to improve and the quality of their manufactures since profits were appropriated by the state. तो इसका यहाँ पे कहने का वही है कि जो भी सरप्लस है और वो सब स्टेट ले लेता है, टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, तो ये इनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है इम्प्रूव करने का क्वालिटी ऑफ देयर मैन्युफैक्चर्स, because you are selling and then your all the money is being taken away, so you will not improve on such things. Then he says that manufacturers were consequently everywhere in decline during this period. He says कि ये सारे decline में थे. At the same time, he also write, he considered that vast quantities of the world's precious metals flowed into India as manufacturers were exported in exchange for gold and silver. So these two statements, if you see, they are very contradictory. And these two contradictory statements are given by Bernier himself. एक जगह वो कह रहा है कि डिक्लाइन में है, दे आर नॉट इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्ट्स, एंड ऑन द अदर हैंड ही इज सेइंग कि बहुत सारे जो वास्ट क्वांटिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रेशियस मेटल्स है वो इंडिया में जा रहे हैं. सो दिस यू सी दैट ही इज हिमसेल्फ नॉट अवेयर ऑफ द रियलिटी. तो ये एक पॉइंट अगर वो मेंशन कर रहा है, देन ऑन द अदर हैंड इज आल्सो हिंटिंग एट समथिंग एल्स. So you also notice the existence of prosperous merchant community engaged in long distance exchange. So how is this possible that one time you are saying that everything is in decline, and then you are writing about the prosperous merchant community and precious metals flowing into India? So next, if you see, अगर हम टाउन्स के बारे में यहाँ पे बात करें, एक ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा बहुत समझने में यू शुड फोकस ऑन दिस. टाउन्स को किस तरीके से उसने एक तरीके से ये भी एसोसिएटेड है, दिस टॉपिक इज आल्सो एसोसिएटेड विद द लैंड ओनरशिप ओनली. सो इन फैक्ट ड्यूरिंग द 17th century about 15% of the population lived in towns. दिस इज पार्ट ऑफ दिस पोर्शन ओनली. कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, बट इसमें हमने कहा है कि टाउन्स के बारे में बर्नियर की जो अंडरस्टैंडिंग थी, हाउ इट इज एक्चुअली उसने जो लिखा वो कितना सच था और सच्चाई क्या थी, वो भी हम पता लगाने वाले हैं. तो दिस वाज एन, अब देखो इस टाइम पीरियड में जब बर्नियर इंडिया में था 17th century में, तो 15% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो टाउन्स में रह रही थी. एंड ये जो परसेंटेज है ये पूरे वेस्टर्न और यूरोप से काफी ज्यादा था, अर्बन पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है. इन स्पाइट ऑफ दिस इवन ये जो फैक्ट है इसके होने के बाद भी, बर्नियर डिस्क्राइब द मुगल सिटीज एज कैंप टाउन्स. सो कैंप टाउन्स पे नोट्स यू शुड हैव एटलीस्ट, कि इसमें तुम इंक्लूड करो या फिर लॉन्ग आंसर में, दो इट इज नॉट आस्क्ड सेपरेटली, बट फिर भी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैंप टाउन्स क्या है. Maybe we can incorporate it into one of our answers. But overall, this we see that this is a kind of counter argument to Bernier ne kaha. So he believed that these came into existence when the imperial court moved in and rapidly declined when it moved out. So towns जो है, he associated the towns with courts, कि towns जो है वो flourish करेंगे कब. देखो यहाँ पे अगर हम टाउन्स है मुगल पीरियड के, तो वो दे विल बी फ्लरिशिंग व्हेन द कोर्ट इज फ्लरिशिंग. कोर्ट के साथ इनका फ्लरिशिंग चलेगा, they will be flourishing like this. And similarly towns डिक्लाइन करेंगे, उनकी सिचुएशन डिक्लाइन करेगी अगर मुगल कोर्ट डिक्लाइन करेगा. तो इन दोनों को साथ में ही दे वर लाइक बोथ मैरिड टू ईच अदर, इस तरीके की सिचुएशन थी. He suggested that they did not have viable social and economic foundation. तो यहाँ पे टाउन का जो सोशल और इकोनॉमिक फाउंडेशन है, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं एग्जिस्ट करता था. एंड दे वर जस्ट डिपेंडेड ऑन द इंपीरियल पैट्रोनेज. तो जो पूरा टाउन का सिस्टम है वो चल रहा है बिकॉज द किंग इज प्रोवाइडिंग मनी, बिकॉज द कोर्ट इज गिविंग मनी, बिकॉज द कोर्ट इज सस्टेनिंग देम. बट अब हमें यहाँ पे कैंप टाउन्स के थोड़ा बहुत जो है काउंटर आर्ग्यूमेंट देखने के लिए मिलेगा. काउंटर आर्ग्यूमेंट में हम इसके इस तरीके से देख लेते हैं. सी आई
did not see a question related to camp town, but I suppose and I believe this is important topic. It may be asked, may not be asked. अभी अभी नहीं तो कभी question धीरे धीरे change होते ही रहते हैं. So as in the case of question of land ownership, Bernier was drawing an oversimplified picture. हम ये चलो ये point है कि वो हमें पता है कि oversimplified. He was just categorizing into black or white. So there were all kinds of towns. अलग अलग types के towns देखने के लिए मिलेंगे मुगल period में, in 17th century specifically. तो मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स हो गए, ट्रेडिंग टाउन्स, पोर्ट टाउन्स, सेक्रेड सेंटर्स, पिलग्रिमेज टाउन्स, एक्सेट्रा. And their index, sorry, their existence is an index of the prosperity of merchant communities and professional classes. And because इस तरीके के टाउन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एक इंडेक्स है जो हमें बता रहा है कि मर्चेंट कम्युनिटीज भी प्रॉस्पेरस थी, प्रोफेशनल क्लासेस भी प्रॉस्पेरस थी. Merchants often had strong community or kin ties. तो मर्चेंट्स की अगर हम बात करें, जो दे वर इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड ऑल, इनकी खुद की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती थी. एंड ये ऑर्गेनाइज्ड रहते थे अपने ओन कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडीज में. कास्ट के बेसिस पे ऑक्यूपेशनल बॉडीज क्रिएट विद इन द कास्ट. यू विल सी कि कास्ट में भी अपने ऑक्यूपेशन के बेसिस पे यू नो ये हैव दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ. In Western India, if you see, these groups were called Mahajans. ये term is important for your MCQ कि ये Western India में. And if you are watching it like अभी हिस्ट्री में अगर तुम आगे जाके CUET एंड ऑल दोगे, तो ये सारे चीजें जो है तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान देना है इफ यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर हिस्ट्री. तो महाजन्स जो है, इन्हें कहा गया वेस्टर्न इंडिया में. एंड इनके जो चीफ थे उनको कहा जाता है सेठ. तो मर्चेंट्स है महाजन्स, चीफ को कहा गया सेठ. अब है इन अर्बन सेंटर्स सच एज Ahmedabad, the Mahajans were collectively represented by the chief of the merchant community who was called Seth. Nagar Seth. अहमदाबाद में नगर सेठ हमें चीफ देखने के लिए मिल जाते हैं. अदर अर्बन ग्रुप्स इंक्लूडेड प्रोफेशनल क्लासेस जैसे फिजिशियंस हो गए, जिसको हकीम और वैद कहा जाता था. टीचर्स हो गए जैसे पंडित और मौलवी हम कहते हैं. लॉयर्स हो गए, दैट वी यू हैव वकील्स. पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर्स. देयर इज नो यू नो सच थिंग एज की कोई मिडिल क्लास नहीं है, सिर्फ पुअर ही पुअर है या फिर सिर्फ रिच ही रिच है. यू कैन सी दीज काइंड ऑफ professional people existing during that time. Well, some depended on imperial patronage. कुछ लोग जो है यहाँ पे, अब हम देखते हैं टाउन फ्लरिश कर रहा है. तो टाउन में अर्बन सिटी अर्बनाइजेशन में क्या होता है, अर्बनाइजेशन में यू हैव डिविजन ऑफ लेबर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट गोइंग इनटू द बेसिक्स, बट हमें यहाँ पे समझ के रखना है कि इनमें से कुछ लोग जो है इंपीरियल पैटर्नेज पे डिपेंड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी कैलीग्राफर्स, इफ यू सी म्यूजिशियंस, पेंटर्स, ये कोट पेंटिंग्स बनाते थे. उसमें फिर यू हैव द कैलीग्राफर्स हु यूज्ड टू डू कैलीग्राफी इन दी वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. म्यूजिशियंस है जो एसोसिएटेड है कोर्ट्स के साथ. देन यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ वी कैन से क्राफ्ट्समैन है जो एसोसिएटेड होते थे डायरेक्टली कोर्ट से, एंड पैटर्नेज के कारण वो फ्लरिश करते थे. बट मेनी मेड देयर लिविंग बाय सर्विंग अदर patrons, while still others served ordinary people in crowded markets or bazaars. But there can be other patrons as well. दूसरे smaller patrons भी होंगे, and नॉर्मल लोग भी होंगे जिनको इन सारी चीजों का मतलब वो डिमांड क्रिएट करेंगे. सो इट डज नॉट द होल द टाउन कैंप टाउन वाला जो एक assumption है बर्नियर का, दैट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू. लास्ट टॉपिक जो है वो है बर्नियर ऑन सती. एज आई टोल्ड यू, ये क्वेश्चन एक आया हुआ है इसमें. इसकी बुक का नाम पूछा गया था. ओके, सो वेट, यहाँ पे बुक का नाम मैंने आई गेस मेंशन किया है. एक जस्ट अ सेकंड, लेट मी सी. यस, दिस इज द बर्नियर्स book name, Travels in the Mughal Empire. This is the name of the book. Sorry, I missed it out. ये है इसके अकाउंट का नाम. तो अभी हम पढ़ रहे हैं. ओके, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस. तो इसमें हम अब देखते हैं कि लास्ट में जो सती है, सती के बारे में क्या बोलता है. सती के बारे में बर्निया ने कहा कि एक तरीके से तो कंटेम्प्रेरी यूरोपियन ट्रैवलर्स जो थे वो एक तरीके से हाईलाइट करेंगे. दे विल यूज द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज अ क्रूशियल मार्कर ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सोसाइटीज. तो वुमेन को किस तरीके से किसी सोसाइटी में ट्रीट किया जा रहा है, इट वाज यूज्ड एज अ मार्कर टू tell whether a society is progressive or whether a society is kind of living in a very orthodox society का हम बात करें. और वेस्टर्न जो भी स्कॉलर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, दे यूज्ड दिस thing, treatment of women as a tool
to categorize the societies. Not surprisingly, Bernier chose the practice of sati for detailed description. तो उसने सती के बारे में detailed description दिया है. He noted that while some women seemed to embrace death cheerfully, others were forced to die. तो इसका ये एक observation है. बाकी child सती पे एक source है, you can refer to that also. And thank you so much for watching. If you like this video and you want me to continue teaching, like you have very little time left, but if you are watching these lectures very properly, you will be able to understand things better. प्लस इसमें मैंने बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हैं, जैसे कुछ और ट्रैवलर्स के नाम मेंशन थे बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ बर्नियर. यू जस्ट लुक एट इट कि कौन आया था कौन नहीं आया था, एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से देख लेना, बिकॉज आई एम जस्ट कवरिंग द पीवाईक्यूज. जो लॉन्ग वाले हैं उनको भी मैंने कवर किया है. Then please subscribe to our YouTube channel, like this video, share it with your friends, and do comment if there is any doubt. I'll try to solve it. Thank you for watching. And if you want to buy notes, notes are also available for history. Just message, put a message, give a, send a message to Humanities Adda on Instagram. Search for Humanities Adda on Instagram, and there you can ask for the notes. The price of the notes, history notes, is ₹100, and you will get all the chapters and all that. So thank you again for watching. I'll just end this lecture over here.